welcome to E-Town News, जहां आपको मिलेगा डेली डोज ऑफ बॉलीवुड न्यूज, फैशन ट्रेंड्स, टीवी एंड सोशल मीडिया से जुड़े हर अपडेट. A show which gives you the day's lowdown of all the best happenings in the world of glamour. तो इंतजार किस बात का? Let's take a look at today's headlines. Anushka Sharma smiles as Virat Kohli holds her after their return to Mumbai post-Europe trip. Rudrani Chaturaj chats with Kareena Kapoor Khan. Salman Khan makes a dabang entry at the airport in bulletproof car amid looming death threats. Love you, sir. Bye. Bye, bye, bye. Salman, bye. सलमान खान ने बुलेटप्रूफ कार में ली एयरपोर्ट पर एंट्री. सलमान खान के फैंस ने एक्सप्रेस किया उनके लिए अपना प्यार. Love you, sir. Bye. Bye, bye, bye. गॉडफादर के सेट पर सलमान खान ने की टीम लाइगर से मुलाकात. सलमान खान ने दबंग स्टाइल में की एयरपोर्ट पर एंट्री. सलमान खान को उनकी व्हाइट कलर की एक्सपेंसिव बुलेटप्रूफ लैंड क्रूजर से उतरते हुए किया गया क्लिक. आप देख ही सकते हैं कैसे सलमान खान अपने ट्रस्टेड बॉडीगार्ड्स शेरा और बाकी सिक्योरिटी पर्सनल से घिरे हुए हैं. मुंबई एयरपोर्ट पर सलमान खान के इस सरप्राइज अपीयरेंस ने उनके फैंस को भी एक्साइट कर दिया, जो सलमान खान को देखते ही उनके लिए अपना प्यार शो करने लगे. और इसलिए शायद यहाँ सलमान खान पिक्चर के लिए तो नहीं रुके, बट ही डिड पॉज टू एक्नॉलेज हिज फैंस हु वर हर्ड शाउटिंग लव यू सलमान भाई. Love you, sir. Bye. Bye, bye, bye. Salman, bye. आपको बता दें, रिसेंटली मिले थ्रेटनिंग लेटर के बाद से ही सलमान खान ने लो प्रोफाइल मेंटेन कर रखी है. हालांकि इसके बाद से सलमान खान की सिक्योरिटी काफी बढ़ा दी गई थी, लेकिन सलमान खान खुद भी इसका पूरा ध्यान रख रहे हैं. Salman Khan has been going all out to make sure his family and his film sets are well guarded. और इसके लिए न सिर्फ उन्होंने घर पर ही सिक्योरिटी बढ़ा दी है, but reports state that additional security guards have been spotted on the film sets. Reportedly, recently Mumbai police granted the actor a license for a personal gun. बता दें, सलमान खान ने ये सब सिर्फ अपने पापा सलीम खान और खुद को मिले डेथ थ्रेट के चलते किया है. वहीं दूसरी तरफ सलमान खान और विजय देवराकोंडा की मुलाकात की एक पिक्चर सामने आई है. दरअसल लाइगर के प्रमोशन के चलते विजय देवराकोंडा एंड टीम लाइगर गॉडफादर के सेट पर पहुंचे, जहां मेगा स्टार चिरंजीवी और सलमान खान के एक स्पेशल सॉन्ग की शूटिंग चल रही थी. ऐसे में विजय देवराकोंडा एंड हिज टीम हैव टेकन द ब्लेसिंग्स ऑफ बोथ द सुपरस्टार्स फॉर देयर फिल्म. Both the superstars wished the best to the team. इसे शेयर करते हुए मेकर्स ने लिखा, India's superstars shower their love and blessings on the next generation. Mega star at K Chiru tweets, and the most favorite bhai at being Salman Khan met and gave their blessings to team Liger in Mumbai. ऐसे में अब जब विजय देवराकोंडा को सलमान खान और सुपरस्टार चिरंजीवी दोनों की ब्लेसिंग मिल गई है, तो श्योरली वो इन दोनों के इस जेस्चर से काफी खुश होंगे. अनुष्का शर्मा एंड विराट कोहली की क्यूट केमिस्ट्री हुई कैप्चर. फैंस ने अनुष्का शर्मा और विराट कोहली को बताया बेस्ट कपल. अनुष्का शर्मा और विराट कोहली का वेकेशन हुआ खत्म. हॉलिडेज से लौटे अनुष्का शर्मा और विराट कोहली सुपर हैप्पी मूड में आए नजर. अपनी फेवरेट जोड़ी को इस तरह देख नेटिजन्स ने किया रिएक्ट. सर थोड़ा फोन आप पीछे लीजिए. अनुष्का जी इधर देखो. मैं विराट सर. रुकिए. Well, recently मुंबई एयरपोर्ट पर पावर कपल अनुष्का शर्मा और विराट कोहली को कैमरास ने स्पॉट किया. अनुष्का शर्मा और विराट कोहली अपने यूरोप वेकेशन से लौटे थे. यहाँ दोनों स्टाइलिश लग रहे थे और पापरात्जी के लिए भी स्माइल करते हुए पोज कर रहे थे. आप देख ही सकते हैं शटरबग्स के लिए पोज कर रहे विराट कोहली अनुष्का शर्मा कितने हैप्पी मूड में दिख रहे हैं. दोनों की खुशी दोनों के चेहरे पर साफ झलक रही है. यहाँ they were spotted walking hand in hand too. In the video, Virat Kohli could be seen in shorts, a t-shirt and a shirt, while Anushka Sharma is in casual track pants and a top with a cap. अनुष्का शर्मा और विराट कोहली का ये वीडियो इंटरनेट पर हर तरफ वायरल हो गया है
और नेटिजन्स ने भी अपने फेवरेट कपल के इस वीडियो पर ढेरों कमेंट्स किए हैं। दोनों को इस तरह साथ देख fans called them the best couple. One fan wrote, "Casually in love." Another wrote, "Most loving couple." एक और फैन ने कमेंट में लिखा, "They look so simple." बता दें, अनुष्का शर्मा और विराट कोहली ने अपने यूरोप वेकेशन के दौरान काफी अच्छा टाइम स्पेंड किया है, जिसकी ग्लिम्पसेस अनुष्का शर्मा अपने सोशल मीडिया पोस्ट्स के जरिए सभी के साथ शेयर कर रही थीं। इस ट्रिप पर लिटिल वामिका भी उनके साथ गई थी। हालांकि विराट कोहली अनुष्का शर्मा अपनी डॉटर को मीडिया ग्लेयर से दूर रखते हैं, इसलिए एयरपोर्ट पर भी दोनों को सैम्स वामिका ही क्लिक किया गया। वैसे अनुष्का शर्मा और विराट कोहली ने अपने लंदन ट्रिप के दौरान मुंबई के फूड का भी पूरा स्वाद लिया, और इस बात का प्रूफ दोनों की ये पिक्चर है, जिसमें दोनों एक मुंबई बेस्ड क्विजीन रेस्टोरेंट के बाहर पोज करते दिख रहे हैं। वहीं ऑन द वर्क फ्रंट, अनुष्का शर्मा is set to return to the big screen with the sports drama Chakda Express. The film is inspired by the life of former Indian cricket captain Jhulan Goswami. ऐसे में अब जब अनुष्का शर्मा का ब्रेक पूरा हो चुका है, तो वो एक बार फिर से अपनी फिल्म चकदा एक्सप्रेस की शूटिंग में अपना बेस्ट देने की तैयारी में जुट जाएंगी। Hello everyone, I'm Rudrani and welcome to Speak Easy. My guest today is very special. She made varied choices and she continues to do so. Sassy and very talented. I'm talking about Kareena Kapoor Khan. Hello. Hi. It's been a while, but it's so lovely to be here and chatting with you. Thank you. But I meant every word of it. You know, you've always taken risks very early in your career, and you continue to do that, right? And it, in a way, it did. You know, it sort of paved the way for a lot of actors. How important was that when you were doing it? You know, when you started in the career, in the beginning of it. No, I mean, I think it's been because I've always been passionate about acting. I've always loved acting, always wanted to be in front of the camera. So trying to always do something different was something that I've consciously maybe done. And I was actually blessed with good choices in the beginning of my career, like, you know, whether it was Refugee or whether it was Omkara, whether it was Chameli. And I'm happy I did those films at that time. And now I'm in, like, you know, the idea is also that you have to keep evolving, keep changing, keep growing. Otherwise, it's not possible to have a 22-year, you know, career. Absolutely. You're reuniting with Ria. Yeah. And then you have Devotion of, you know, of course. Suspect, yeah, which will be amazing. It will be? Yeah, Tell us a little on that. It'll be brilliant. I'm so excited. I can't wait for it. It'll be out on Netflix, I think December, Jan. And that's something that we'd see you completely different again. Yeah, absolutely. Also because working with like Jaideep and Vijay and kind of like coming from a different world, I think it's like fireworks when we're like all together. It's like really, it's got that, you know, and then never worked with Sujoy. And I think he's got like an amazing cast, amazing actors, and the kind of chemistry that all of us have shared is what I think has made it absolutely like divine. You know, I also want to give you a lot of credit for how you do, you know, do take stand where it needs to be. You know, when you're talking about, let's say what happened with Ramayana, the entire thing being twisted into something else where, you know, the entire topic of pay disparity gets taken away. And you have to give explanation to the people around you. Yeah, but the reason that I never give any explanation or never did for that, because I was never offered that film. Because I wasn't, so I don't know why I was even put into that category. Yeah, because I wasn't a choice for the film. Yeah, but then the entire furore, I think, is unnecessary, right? Maybe I wouldn't have. Who knows? Correct. So, but like, you know, made up stories. But now, I don't mean to even put anybody down, but now they need to have some stories also, because sometimes every day people are looking for some sort of a fodder. What to do, kya ho raha hai, and going through Instagram, kuch to hona chahiye, kuch to hona chahiye. So then I don't know from where this came up. You know, I spoke to Saif about it, and he's like, yeah, you know, as an artist, I want to do crazy things, but I am being careful about, you know, how the people around me react, because he's gone through so much of this. Yeah, but he also doesn't react now, because, you know, honestly, there's not beyond a point. If you don't feel like reacting, actors just, I mean, you know, shouldn't, because today there's like 100 platforms, 100 things are being said. How many things will a person stand there and clarify? Or will we do our job, or will we stand there and just keep putting tweets and Insta posts and things like this and clarifying things? I think there's a limit to that also. You know,
you also maintain a good balance between social media and Yeah. sort of cutting off, taking your holidays with the family. I'll post what I want to post. Yeah, but is that around you when everybody is trying to build their brand per se? You know what I mean? As actors, you hear that a lot. You know, does it get frustrating because you are trying to still be you and not be very curated, right? Yeah, but I've never thought about myself as a brand. I'm a person, I'm an actor, and like, you know, what it is, it's there, and people, I think, like me because I'm as real as it gets. And I don't have like, you know, like 5 agencies and 4 PR people and 3 managers running after me telling me that I should do this interview or, you know, I should put this post or I should do this or, you know, like let's sit down and have a chalk, a plan. I can't because I don't have the time. I have 2 kids. I have a family, I have a life, I have friends. I don't have time to do so much. So my job is to be loyal to my fans, do great work, try and do the best I can, choose the best I can, and then, you know, kind of just go back home and run away and give my time to my family and my kids. In these 22 years, what has changed for Kareena Kapoor Khan? And what have you retained still? I have retained my confidence and hopefully my talent. Of course. I have learned from my mistakes. I'm more like calm and in Zen mode, which could be borderline boring, but it's fine because that's just the way I am now. But your sass is intact, yeah? Whenever it's required. Whenever it's required. That's well put. But otherwise then, it's like, you know, I'm so busy now with my life and with, you know, so many other things, and that's so important that, you know, sometimes I just like, other things don't affect me anymore. And it's so important to be like that because in a world that we're living in today, it's important to try and stay as unaffected as possible. So you can focus on your characters, you can focus on your work, you know, like on yourself. It's so important to do that also. It's like to give time to yourself when so much is happening outside, inside, everything. So I'm a time management pro, as Saif says, and that's the reason that I think I'm quite calm. And also a great mother, right? With I love the Spanish theme that you put up. Yeah. I mean, I'm trying to always do the best, and, you know, like COVID, I've had to, like, you know, entertain Taimur, so he took up Spanish, and now, I mean, he's going to still continue it. So, I mean, like I said, that just, you know, striking a balance between everything, you know, enjoying this also, but also like staying a bit away. We're wrapping in 1 minute, so here I'm going to ask you some quick fun questions and just short answers, whatever comes to your head. All right, a rumor about yourself that makes you laugh very much. Just recently, there was that I'm pregnant again. I think that I was like, oh God, I was actually laughing. I was like, oh my God, it is actually the wine and pasta that's like making people say that. But by the way, anyway, that picture was morphed. Huh? Really, no? Yeah, even though I clarified it. Yeah. Because honestly, my stomach isn't that big. Please look at her. Please see. Yeah, so you please. can see. So it was morphed, but I still gave a clarification because I thought it was fun. The most honest person in your life? I think my children. Because they're so honest, because they're so untouched, they're so like, you know, whatever comes to their mind, they just say it. What's that one 4 a.m. friend that you can always call anytime in your life? 4 a.m. friend, I think I can call all my friends and my family. I think all of them, whether it's Ammu, my sister, I think all of my friends are like, I mean, I know I can pick up the phone and call them. Aamir, and you're going coffee with Karan. Is this a very subdued Kareena Kapoor, or do we see the sass? Well, I've left the sass to all the youngsters this time. That's all I can say. So you're with the wiser version, is it? We'll see. Wiser and smarter, and like now I'm like, oh God, okay, let me go home. Fair enough. An actor from the Tamil, Telugu and Kannada industry that you really, really want to work with? I think all of them are amazing. Whether Saif just worked with Prabhas and he said he had such a wonderful time working with him. I mean, they all, like, whether it's Dhanush, I mean, they're so amazing, and like, what an actor. Like, every time you see him in any role, I think his performance is of another level. So I think all of them are like, they're all so good, yeah. The best quality about Aamir Khan and one slightly annoying quality? Annoying, I don't think, annoying Aamir is like sometimes because obviously, you know, he wants to be that, get that like till he's correct. The perfection about is it. basically. Yeah, so sometimes like somebody like me who's like very spontaneous, it can be a bit like taxing. Like dobara karo wahi cheez. Haan, wo wala. But I mean, he's a thespian, and I truly am like humbled and honored that I've had
this chance of working with Aamir in such prolific films, like whether it was Three Idiots, whether it was Talash, whatever the fate of Lal Singh, I think he truly is an icon is less. It would kind of put him down to call Aamir an icon. He truly is a legend. I'm really, really looking forward to Lal Singh Chaddha. Yeah, it's lovely. Stay the way you are. You're amazing, Kareena. Thank you. And sending you lots of love. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Coming up on the show, Aamir Khan takes a dig at Karan Johar. आमिर खान ने करण जौहर से पूछा कि why is he so curious about celebrities' sex lives? करीना कपूर खान ने उड़ाया आमिर खान के फैशन सेंस का मजाक। आमिर खान और करीना कपूर खान ने जमकर किया करण जौहर को रोस्ट। करण जौहर के शो पर पहुंचे आमिर खान और करीना कपूर खान। यहाँ आमिर खान ने करण जौहर से ऐसा सवाल पूछा जो शायद सभी पूछना चाहते थे। दरअसल आमिर खान ने करण जौहर से पूछा कि why is he so curious about celebrities' sex lives? दरअसल अपने शो पर करण जौहर asked Kareena Kapoor Khan about the quality of sex one gets after having babies. Kareena Kapoor Khan tells him that he would know considering he too has twins of his own. इस पर रिस्पॉन्ड करते हुए करण जौहर said he cannot talk about such things with his mother watching the show. ऐसे में आमिर खान quickly gave it back. Your mother doesn't mind you talking about other people's sex lives. कैसे सवाल पूछ रहा है? वैसे यहाँ करीना कपूर खान ने भी बताया कि उन्हें आमिर खान की क्या बात annoying लगती है। Kareena Kapoor Khan said, Aamir takes 100 to 200 days to shoot a movie, while Akshay Kumar dusts it off in 30 days. She said that's the one thing about Aamir Khan that annoys her. वैसे यहाँ आमिर खान के फैशन सेंस का मजाक उड़ाने में भी करीना कपूर खान पीछे नहीं रही। करीना कपूर खान से जब आमिर खान के फैशन स्टाइल को रेट करने को कहा गया तो उन्होंने आमिर खान के फैशन स्टाइल को माइनस में रेट किया and said that while he may be more friendly to the paparazzi, they actually like her more. आपको बता दें कि आमिर खान और करीना कपूर खान बहुत जल्द फिल्म लाल सिंह चड्ढा में नजर आएंगे और अब देखना ये होगा कि आमिर खान की ये मच अवेटेड फिल्म बॉक्स ऑफिस पर क्या कमाल दिखाती है। प्रियंका चोपड़ा जोनस और निक जोनस पेरेंटहुड को पूरी तरह से कर रहे हैं एंजॉय। हालांकि डोटिंग पेरेंट्स ने अब तक अपनी बेबी माल्टी मरी चोपड़ा जोनस का फेस रिवील नहीं किया है। ऐसे में रिसेंटली एक इंटरव्यू के दौरान पीसी की मॉमी मधु चोपड़ा ने हिंट देते हुए बताया दैट दे मे रिवील हर फेस ऑन हर फर्स्ट बर्थडे। वैसे इसके अलावा मधु चोपड़ा ने ये भी बताया कि वो प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस की बेबी को मसाज देती हैं और वहीं निक जोनस गिव्स हर अ बाथ एंड चेंजेस हर डायपर्स। बता दें प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस ने अपनी मॉम्स के नाम पर अपनी बेबी का नाम रखा है और इस जेस्चर से मधु चोपड़ा बहुत ऑनर्ड हैं। मॉम टू बी आलिया भट्ट अपने मैटरनिटी लुक से सभी को कर रही हैं मेस्मराइज। वेल आलिया भट्ट इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म डार्लिंग्स का जबरदस्त प्रमोशन कर रही हैं जो 5 अगस्त को एक OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी। ऐसे में रिसेंटली आलिया भट्ट वाज स्पॉटेड इन अ लाइट पिंक एंड येलो वोलuptuous कुर्ता एंड पैंट्स। She was looking pretty in the outfit. बता दें आलिया भट्ट अपनी मैटरनिटी लुक्स को लेकर काफी एक्सपेरिमेंट्स कर रही हैं। कटरीना कैफ ने अपने ग्लैमरस फोटोशूट की ग्लिम्स अपने फैंस के साथ की शेयर। इस फोटोशूट में कटरीना कैफ ब्लैक एंड व्हाइट कलर की स्ट्राइप्ड आउटफिट में बेहद स्टनिंग दिख रही हैं। अपने इस लुक को कटरीना कैफ ने स्ट्रैपी हील्स के साथ किया कंप्लीट। कटरीना कैफ ने इसे अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर पोस्ट करते हुए कैप्शन दिया, "A little posing and the necessary hair flick." सैफ अली खान की सिस्टर सबा अली खान को अपने नेफ्यू इब्राहिम अली खान पर है प्राउड और इसी बात का जिक्र उन्होंने अपने सोशल मीडिया पेज पर उनकी एक फोटो के साथ किया। इस अनसीन पिक्चर में इब्राहिम अली खान जया बच्चन के साथ नजर आ रहे हैं जो रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के सेट्स की है। शेयरिंग द फोटो सबा अली खान कैप्शन द पोस्ट, "Proud of you, heart emoji, Iggy." बता दें इब्राहिम अली खान हैज असिस्टेड डायरेक्टर करण जौहर इन हिज अपकमिंग रोमांटिक ड्रामा। डंकी के सेट से शाहरुख खान और तापसी पन्नू की पिक्चर्स आए दिन वायरल हो रही हैं। रिसेंटली दोनों की एक और पिक्चर इंटरनेट पर हर तरफ सरफेस कर रही है जिसमें दोनों डायरेक्टर राजकुमार हिरानी के साथ नजर आ रहे हैं। A fan page has shared this picture of the Donkey team from Budapest. इस पिक्चर में शाहरुख खान ऑल ब्लैक अटायर में है। He has an intense look on his face and he seems to be in the middle of a conversation with राजकुमार हिरानी. The director too is looking at शाहरुख खान and is talking to him. आपको बता दें करंटली शाहरुख खान और तापसी पन्नू लंदन में फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं।
क्या आप जानते हैं पॉपुलर स्टार विजय देवराकोंडा और नेशनल क्रश रश्मिका मंदाना एक दूसरे को कर चुके हैं डेट। एक न्यूज पोर्टल में आई रिपोर्ट के मुताबिक रश्मिका मंदाना साउथ एक्टर रक्षित शेट्टी के साथ अपनी एंगेजमेंट कॉल ऑफ करने के बाद विजय देवराकोंडा के साथ रिलेशन में आई। अराउंड दैट टाइम दे वर इन द मिड्स ऑफ अ कपल ऑफ फिल्म्स टुगेदर लाइक गीता गोविंदम, डियर कॉमरेड, व्हिच ओनली मेड देम अंडरस्टैंड ईच अदर वेल। हालांकि 2 साल पहले इस रिलेशनशिप का एंड हो चुका है और अब दोनों अपनी लाइफ और अपकमिंग फिल्म्स में सुपर बिजी हैं।